Hello and welcome to Policy Beats. I am Usama Nizamani and we're doing our first series, Envisioning 2047, जिसमें हम टेक स्टार्टअप इनोवेशन के बारे में बात करेंगे और आज हमारे एपिसोड में we have Komal Salman who is a young creative professional और आज हम Web 3.0 and थोड़ा उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. Komal, welcome to the show. So Thank you, glad to have Sama. you on our first podcast. Thank you so much. So, Komal, let's get started with our conversation. Could you help us understand कि ये Web 3.0 है क्या चीज़? Web 3.0 is basically the third generation of the internet. जैसे Web 1 में आपके पास बिल्कुल static websites थी and only जो आपकी like बड़ी news corporations थी या जैसे आपके बड़े hotels की multinational chains थी, they were broadcasting information on the internet and you could only read it. Okay. When the second generation of the internet came in, social media, Facebook, Twitter, Instagram, there was a switch and you went on to user generated content. तो जिसका जो दिल कर रहा है वो डाल रहा है and that's when the term netizens came in. Mhm. Web 3 जो है, it takes internet to another level. It includes machine learning, it includes artificial intelligence, and जो इसकी main supportive technology है वो blockchain है, and it also includes augmented reality and virtual reality. Right. अच्छा, मुझे ये बताओ कि overall, general attitude towards technology is quite very binary oriented Hmm. in Pakistan. कि यार एक चीज़ अच्छी है या बुरी है. And then when you contrast it with the Web 3.0, how do you see that overall attitude towards technology? And do you see any nuances, yeah, shades of nuances, in terms of our attitudes towards technology itself? क्या लगता है तुम्हें? I think कि generally जो हमारा एक attitude है, not just towards tech, लेकिन कोई भी नई चीज़ आ जाए तो लोग generally घबराते हैं. This is Mhm. basic consumer psyche. उसके बाद जब आपको पता हो कि आपने किसी चीज़ के साथ अडैप्ट करना है, तो जनरली आप 2-3 दफ़ा सोचते हो बिफोर यू टेक द प्लंज इनटू इट. आई Mhm. थिंक इट्स जस्ट जनरल ह्यूमन साइकी मे बी. हमारे कल्चर में थोड़ी ये चीज़ ज़्यादा है. हमारा एक बेसिक मसला है कि जिस चीज़ की समझ मेजॉरिटी को ना आ रही हो, उसको बैन कर दिया जाता है. जैसे वेब 3 के साथ हुआ है. हैविंग सेड दैट आई थिंक कि लाइक जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं एग्ज़िस्ट करती, जिसके सिर्फ़ एडवांटेजेस हों और जिसका कोई डिसएडवांटेज ना हो. तो Mhm. हैविंग सेड लाइक विद ऑल ऑफ दैट यू नीड टू रियली बी केयरफुल एंड सॉर्ट ऑफ weigh things out कि इफ द डिसएडवांटेजेस outweigh the pros of something, तो फिर तो आप ठीक है. You're banning it, तो it's for the greater good समझ आती है. But तुम्हें लगता है कि कोई difference है, like, in terms of general attitude between generations? I think yes. अच्छा, किस तरह से? Like I think I'm the last generation or sub generation जिसको dial-up internet याद है. Mhm. My younger sister and my cousins, तो it's impossible for them to comprehend कि कंप्यूटर में भी कार्ड लोड करना Even होता like था. relate with the entire और idea of ये क्या तरीका है कि dial-up इंटरनेट internet. चल रहा है हाँ, तो फ़ोन नहीं चलेगा घर हाँ, का. हाँ. तो आई थिंक जनरली लाइक ऑब्वियसली जब आपने पैदा होते साथ एक चीज़ देखी है तो आपको उसको अडैप्ट करने की ज़रूरत नहीं बनती. इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जो जनरेशन है व्हिच हैव बीन निकनेम्ड द बूमर्स एंड द बेबी बूमर्स, Mhm. आई थिंक डेफिनेटली ये टेक से ज़रा घबराते हैं. एंड आई डोंट थिंक इनका कसूर है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मेजॉरिटी वाला वो वाला टाइम जिसमें आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, वो इन्होंने टेक के बगैर गुजारा है. Okay. या टेक इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था. एंड Mhm. आई थिंक अब टेक प्रोग्रेस इतनी तेज़ी से कर रहा है कि इवन समटाइम्स पीपल लाइक अस वी फाइंड थिंग्स प्रीटी टेक्निकल एंड वी रियली Hmm. हैव टू गेट इनटू इट. Like मैं generalize नहीं करूँगा. हर कोई तो इस तरह से नहीं होता, even like among baby boomers. There are नहीं, people who are willing to adapt. आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल विलिंग टू अडैप्ट. आई Mhm. थिंक जो पाकिस्तान में थोड़ा-सा इश्यू है पर वो मसला ये कहाँ आ है. जाता है कि मतलब वो जो बाइनरी में चीज़ों को देखने का जो आई एक थिंक एटीट्यूड वो स्टार्ट हो मसला जाता है. ये इधर आ जाता है कि इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ सर्टेन जनरेशन टू लुक एट समथिंग विद अ सर्टेन लेंस. Okay. Like me being in my early 20s, I will look at everything in terms of it being a potential opportunity. Okay. I will look at something in terms of being able to innovate,
being able to, put in my ideas and make money off them. ठीक है. For somebody who's aged 50 or maybe 55, 60, they will tend to see they will tend to take a more prudent approach, if I have to put it that Mhm. way. They will see कि अच्छा इसके pros क्या हैं, इसके cons क्या हैं. They will have a very balanced approach to it. Right. जो आपका risk taking है वो general human psychology है कि वो age के साथ कम हो जाता है. Web3 itself इतना rapidly evolve कर रहा है Right. कि you need to be on top of everything all the time. Right. And it's very volatile. तो अब ज़रा मुझे ये थोड़ा बताओ कि ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइक इफ यू वर टू अनपैक द आइडिया ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी इटसेल्फ, क्या चीज़ है बेसिकली ऑगमेंटेड अच्छा, रियलिटी, एंड augmented. and how do you see having any kind of a real impact, you know, in the industry itself, like if you could like unpack the idea to our audience. A lot of museums are turning to AR because it's a very good way to make your art more interactive. Like एक painting है वो दीवार पे लगी हुई है. But if you combine it with AR and you're standing in front of the painting, you can actually see it sort of come to life, if I have Mm-hmm. to put it that way. Mm-hmm. Into Are there like any art augmented galleries from reality. Pakistan that are I don't think so. okay? Not as yet. Okay. But there's this very interesting AR trick I can show you with this Adobe AR software. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, वो अगर अपना काम ऑगमेंटेड रियलिटी में करना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट वुड दे नीड? Acha, animation, ओके. video editing, Mm-hmm. if you want to take your art to like another level, Right. and obviously digital art. Okay. So is there a way of like, say for example, converting your physical pieces of artwork जो आपने like paint किया है वगैरह, and sort of breath a digital life in them by use of, you know, these very same tools that you've just mentioned? For example, if you have an old manuscript, there was this NFT collection I saw, Mm-hmm. and पुरानी manuscripts में जो folios नहीं होते थे, the हाँ. double page ones and like the single page ones, so they animated all of that. Wow. And I think it was something very pretty. Interesting. And speaking of archiving, I think NFTs can be very, very useful उस तरह के आपकी जो documentation process है, Mhm. which we're lacking in बहुत ज़्यादा, partly because documentation is a sign of a healthy society, and I think we are a resilient nation, but we're not exactly a healthy nation. So We've ये been ये jumping. क्या difference है between a resilient nation and a healthy nation? I think resilience is I know we're direct. going a little off tangent here, Yeah, but क्या we're इसमें going a little off इसमें क्या tangent, थोड़ा but difference है? okay. A healthy nation understands the value of art at its core. It Mhm. appreciates art and it creates art. A resilient nation is resilience आपके अंदर तब आती है जब आप crisis में होते हो. Right. When you're in crisis, creativity does tend to take a backseat. Right. Documentary does tend to take a backseat. Could you just tell me कि आजकल क्या developments हो रही हैं NFT के scene में? And if you could also like help us simplify कि यार ये non-fungible tokens हैं क्या चीज़? अच्छा, non-fungible token. It means आपके पास एक जैसे 2 tokens नहीं exist कर सकते पूरी दुनिया में. NFT is any digital asset. Okay. Which is ठीक है. अच्छा, अब जैसे स्टेट बैंक जो है वो करेंसी छापता है ना, इट्स पेपर बट इट्स मिंटेड, तो उसको एक वैल्यू मिल जाती है. ठीक हो गया. उसी तरह आपने कोई भी डिजिटल आर्टवर्क लिया या फिजिकल आर्टवर्क लिया, उसको डिजिटाइज किया, आपने उसको मिंट कर दिया, अगर उसके ऊपर वो ब्लॉकचेन का ठप्पा लग गया तो बस वो NFT बन तो गया. क्या वो ठप्पा दिख जाता है सामने जैसे? नहीं, वो कैसे फिर दिखता है? तो मतलब वो कैसे वो पता लगेगा कि वो ठप्पा आपको शुदा दज्जाल की आर्टवर्क है? तीसरी आंख नजर आएगी. ये क्या आउट ऑफ द मतलब ब्लू? हर चीज नजर नहीं आनी होती ना, नहीं, कुछ चीजें आपने बैक तो एंड पे भी चल मतलब रही आप चाहती होती हैं हैं. कि इस पे कोई मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मतलब आप चाहती हैं कि लोग फिर इस चीज़ को खरीदें ही ना। अच्छा, आप बाजार जाते होंगे. ओके. आपने अगर घर का सौदा लेना है तो आप सुपरमार्केट जाएँगे, आपने कपड़े लेने हैं तो आप रेशेकई के बाज़ार जाएँगे. उसी तरह अगर आपने NFTs खरीदने हैं तो आप NFT मार्केट प्लेस पे जाएँगे. ठीक There है. are certain platforms which is selling NFTs. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल? OpenSea है, भाई Rarible ये हम है, किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे, फाउंडेशन है. बट स्पॉन्सरशिप लाइक नहीं है, हाँ,
Then there's level 2 हाँ platforms. नहीं अगर Um, फिर से तुम रिपीट कर दो कौन कौन से हैं इसमें OpenSea Rarible Foundation. ओके And there's a lot of more platforms as well, but हम्म these are like the 3 most famous ones. since you were telling us that blockchain is a supportive technology of the NFTs तो ज़रा ये थोड़ा बताओ कि since distributed ledgers and blockchain they're the same thing right थोड़ा अनपैक कर दो या थोड़ा समझा दो कि भाई इन सिंपलर टर्म्स ब्लॉकचेन क्या है क्योंकि लोग यहाँ पे समझ रहे होते हैं अच्छा भाई ब्लॉकचेन इज़ बेसिकली क्रिप्टो तो पहले थोड़ा ये बता दो कि ब्लॉकचेन इटसेल्फ है क्या Acha, blockchain is a technology which is basically, it's like an immense amount of data storage. ठीक है पर किस तरह से अच्छा, कैसे वो डेटा ऐसे स्टोरेज होती होता है है एक देखो एक डेटा स्टोरेज तो आप क्लाउड के ऊपर भी कर रहे हो एक डेटा स्टोरेज आप अपने हार्ड ड्राइव के ऊपर भी कर रहे हो बट व्हाट्स it's द like डिफरेंस क्या फ़र्क है you know जैसे again Pokemon reference, but जैसे हम्म Pokemon evolve करता था ना, उस हाँ तरह आपकी data storage mechanisms evolve कर गए हैं. ठीक है इसमें बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रांजैक्शन की है, आपने मुझे एक बिटकॉइन तोहफा दे दिया है, ठीक है आपको ज़्यादा मज़ा आ गया था मुझसे गुफ्तगू करके. तो वो जो आपने ट्रांजैक्शन की है ना, बिफोर इट गेट्स confirmed, हाँ it's going to be sent to like worldwide peer-to-peer networks जिसको कहते हैं. ठीक है और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क्स किस तरह से बने हुए होते हैं It's like server farms. ओके Yes, but it's like a server farm sort of distributed all over the world. तो मतलब ये किसी एक खास जगह पे नहीं है मतलब नहीं. मिसाल के तौर पे एक सर्वर फार्म अगर यहाँ पे है से सेक्टर अच्छा, it's F5 not में exactly a server farm, but I'm just using it as an example. ठीक है ठीक है तो ठीक है it's like this global virtual server farm. ठीक है तो एक लोकेशन मिसाल के तौर पे अगर एक पॉइंट आई एम जस्ट थ्रोइंग द टर्म क्वाइट वेरी कैजुअली अगर एक सर्वर फार्म इधर यहाँ पे है और दूसरा से परहैप्स सैन फ्रांसिस्को में है या कह दो कि एक कराची में है एक बॉम्बे में है एक बीजिंग में है Yeah, एक so सिंगापुर में है these सो computers मतलब are दे कैन बी ऑल ओवर द basically, yeah, प्लेस they're basically called nodes, ठीक है and you can have a node from anywhere from Antarctica to the North Pole. फॉर एग्जांपल एक फाइल है या कोई भी इस तरह की जो चीज़ है इट कैन बी साइमल्टेनियसली एनीवेयर इन एनी ऑफ दीज प्लेसेस मतलब It's gonna go to all of the nodes. simultaneously ठीक है All of them are gonna carry out some calculations. हम्म They're gonna do a lot of math. उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी. तो बेसिकली कंप्यूटर ये कैलकुलेट करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन लाइक इज इट ऑथेंटिक और नॉट, ठीक हो गया या इज इट डूएबल और नॉट. सो देन फॉर हाउ एग्जांपल आपने मुझे एक बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया, आपके अपने अकाउंट में ठेंगा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर्स आपका वो रिजेक्ट कर देंगे जैसे चेक बाउंस होता है. ओके तो वो आपकी ट्रांजैक्शन इज नॉट गोना गो फॉरवर्ड. ठीक हो गया एंड देन हाउ डू यू डू द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू द एनएफटीज Basically, an NFT is a digital artwork or ठीक है any artwork converted into a digital asset. ठीक हो Basically, गया anything converted into a digital asset. अगर आप अपना दिमाग कंप्यूटर में डाउनलोड करके उसकी चिप की NFT बना दें तो वो भी सही है. It's still तो valid. like for example cloud पे भी a lot of hospitals that are operating like a network of hospitals how different would it be to have your data stored you know on a distributed ledger network than say versus a cloud infrastructure The key difference between data storage on web 2, like वो तो already अभी भी आपका data digitally internet पे ही store हो रहा है. ठीक है Um, बट सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज क्या Safety and डिफरेंस होगा security उसमें wise, third parties do not have access to data stored on blockchains. ओके Uh, s- Third parties do have access to data stored anywhere on Web2. ओके ओके तो Like, for इसमें example, if you upload something इधर बैठ के Google Drive के ऊपर, हम्म Google Drive के ऊपर आपने वो चीज़ डाल दी, अगर आपका जो डाटा स्टोर हुआ है, मेलिंग लिस्ट, स्पैम ईमेल, स्पैम एसएमएसेस, वो कैसे आते हैं? बिकॉज़ कंपनीज़ आर एक्चुअली परचेजिंग योर डाटा ओके कि आपके एक्स-वाई-ज़ेड इंटरेस्ट्स हैं. इंस्टाग्राम, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब उसके ऊपर एड्स देना शुरू कर देगा.
वो आपके इंटरेस्ट गेज करके to the respective parties. For example, if I'm selling cooking oil and I hear you talking about it, I know आपका interest है cooking में, तो Instagram will just, sort of direct कि ये फलां बंदा है जिसका इंटरेस्ट है, हम्म। आपसे रेलिवेंट, तो आप अपना बिजनेस इसको एडवर्टाइज करें. नो दैट्स ट्रू, मतलब That's like how the basic whole yeah, advertising works. I mean metaverse and I think Google. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आई थिंक दिस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाटा ओनरशिप. Okay. बिकॉज जो एक सॉर्ट ऑफ मिडल मैन वाला एक कॉन्सेप्ट है ना हमारी रियल लाइफ में भी एंड इवन वेब 2 में भी, वो ख़त्म हो जाता है. एवरी ब्लॉक ऑन द Huh. चेन हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज. Right. जब वो ब्लॉक भर जाता है, जैसे यू आर पुटिंग फूड इन अ बॉक्स, यू Mm-hmm. क्लोज द लिड, इट्स क्लोज्ड. Okay. It will stay stored, Okay. but it will not be accessible to any third party. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अब मैं थोड़ा गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, मतलब वी थोड़ा अनपैक कर दिया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हैं क्या। अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक Hmm. है? आपने मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दे के कहा कि भाई अब इसको एनएफटी में कन्वर्ट करें, और या यू मोटिवेटेड मी इन सच अ वे कि तुमने कहा कि यार चलो इसको एनएफटी में कन्वर्ट करते हैं, अब इसकी कहीं फ़रोख्त करते हैं। तो व्हाट वुड आई नीड टू डू as a budding NFT artist in order to sell my or convert my artwork into NFT and then put अच्छा, it तो up for sale? कन्वर्जन प्रोसेस तो इट्स प्रीटी सिंपल. Okay, ओपन अ मार्केटप्लेस, ठीक है। open an account on it, upload it, mint it. Job done. मतलब it's is it It's that simple? yeah, it's that simple. तो पर मतलब जो सेलिंग वाला पार्ट है वो कैसे होता है? The selling part is जो little सबसे मुश्किल more पार्ट है वो कौन सा है मतलब इसमें? selling it, because you need Okay, to make friends before you find customers. okay. You need to And how build do you find community friends? around your art before you sell it. So basically, if you want to sell an NFT collection successfully, Mm-hmm. उसका बहुत key role होता है community का. Okay. Like abhi recently there was this NFT collection called Itsuki. It was a collection of 6,666 profile picture style NFTs. Just profile pictures. Yeah, What it was the just a girl. okay. उनकी community इतनी strong थी that they sold out within 24 hours. Wow. And where were these artists actually from? Uh, from all over the world, I believe. I see. I don't know where their design team was from. Mm-hmm. I do know 2-3 people in their community. One of them is based in Toronto. She's a Interesting. Pakistani. One of them is, I don't know where he's based, but he's in Mm-hmm. India. I still don't know who's actually behind the तो whole तो thing. क्या ये ज़रूरी है, मतलब is it really important that you have to have like tens or probably hundreds of No, artworks या art you pieces can in order sell a to like collection of 2. I अच्छा know a photographer, he had a collection of 3 pictures. You build a brand out of yourself as an artist. कि लोग आपका काम इसलिए लें because आपने बनाया है. ठीक है, but that would not be just so, Acha, so I NFT mean it would not communities be are an easier mostly, journey to yeah, it's एकदम not. से। It takes several months I'm saying actually. like for a budding artist वो किस तरह से करे, like if Yeah, they for a budding artist, yeah, कि Twitter and Discord are 2 amazing platforms. अच्छा Most of your NFT community is there. हम्म Uh, you have like different communities. आपके group chats बने हुए हैं, Discord channels बने हुए हैं. Set up a Discord, set up a Twitter. Talk to people, attend a lot of spaces, interact with people, make virtual friends, make that bond with people. Uske baad, then take out your collection and trust me, people will support you. but how would you make sure that you don't end up getting ripped off in the process? Why? You won't get ripped off because it doesn't really cost you that much in terms like financial terms mein. Mm-hmm. You can mint on, you know, like if you mint on the Ethereum blockchain, Mm-hmm. जो उसकी fee होती है उसको mint करने की, it's relatively pretty high. You can mint on other blockchain, which Solana, Tezos, Polygon. You can even mint them for free on some of these. Okay. So you're not gonna get ripped off. हद से दिया होगा कि nobody's gonna buy your art. But again, वो वाला risk तो as an artist वैसे भी है आपके पास. Right. If I'm sitting at home and I'm making art,
Maybe people are gonna buy it, maybe people aren't gonna buy it. अच्छा, अभी फिर रेगुलेशन के बारे में अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूं कि like recently there was a report in Dawn that Pakistanis made somewhere around over $600 million in 2021 alone as profit in crypto itself. और हम देखते हैं कि there's hardly any regulation. So how do you go about regulating cryptos and NFTs? किस तरह की मतलब business friendly regulation policy हो सकती है? बेसिकली आई थिंक वेब 3 के इर्द गिर्द जो हाइप क्रिएट हुई हुई है ना, एंड द होल मिस्ट्री अराउंड इट, हम्म, आई थिंक इस सारे उसमें हम ये भूल जाते हैं कि वेब 2 के आगे वेब 3 कुछ भी नहीं है। लाइक वो कैसे? फेसबुक अलोन हैज अ मार्केट कैप बिगर देन ऑल ऑफ वेब 3 combined. Don't you think there would be like a propensity among the giants of the Web 2.0 to stay ahead of the curve? और वो कहेंगे यार चलो यार let's make that move in that direction. Like for uh, example, Tesla मेरे ख्याल से Elon Musk वाले, they do buy like they do accept payments in crypto when they want to like sell their cars. okay, Isn't so that so? I'm going to give you a reality check here. Mm-hmm. Regardless of what new technology comes out and Mm-hmm. how accessible it is to the inaccessible, Mm-hmm. the rich are still going to get richer. हाँ exactly मतलब That's मैं just that's just how the world works. right. There's not anything you can do about it. I'm gonna give you a very interesting example. El Salvador हाँ was the first country to give Bitcoin legal tender. उनकी इकॉनमी के बहुत हालात ख़राब थे। उसके बाद जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, they not only gave Bitcoin legal tender, they've mm-hmm. also proposed to launch their own digital currency, Sango or Sango, however they pronounce it. Excuse me if I have that wrong. तो जस्ट टू से कि आपका जो फेडरल रिज़र्व बैंक है, उनके प्रेज़िडेंट की स्टेटमेंट आई थी कि इट्स अ पॉसिबिलिटी वी कैन कंसिडर। फ्रांस इज़ thinking and working towards building its own digital currency. China is working towards it. The Central European Bank has already announced that they're नहीं चाइना ने तो अपनी डिजिटल करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है कर बट दी है। हाँ डिजिटल करेंसी तो लॉन्च कर दी बट आई डोंट नो कि आर दे थिंकिंग टू वेंचर इनटू क्रिप्टो लाइक बट डिजिटल करेंसी तो उन्होंने The thing ऑलरेडी is, लॉन्च कर दी है China is already बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इट्स द it's सेम like एज द it's एग्जिस्टिंग China हार्ड already is a करेंसी cashless society, हम्म तो I don't दैट्स think ट्रू उन्हें कोई इतना ज़्यादा मसला होगा। By digital currency here, I mean cryptocurrency. Uh, the Central European Bank has also announced that they're launching a digital euro. So the thing is कि अब ये चीज़ आ तो रही है। By the हम्म way, Sri Lanka, given everything we've heard about their economic हम्म crisis, a crypto giant has reached out to them and said, कि, maybe we can help you with this crisis. I'm going to tell you how it's going to work. जैसे आपको याद है जब एक ज़माने में ज़िम्बाब्वे की इकॉनमी क्रैश कर गई थी, द कंट्री वेंट बैंकरप्ट, तो ज़िम्बाब्वे की करेंसी छोड़ के लोगों ने डॉलर्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे उधर। तो I mean, it sounds very dystopian, but let's say there's a country with a crashing economy. So what they can do is replace currency with cryptocurrency, which isn't exactly going to be a very good idea if you just go into it without thinking. But it's maybe 2 decades, 3 decades down the line, we see something like this happen. right so you but don't you think it's really important कि instead of making that transition to say uh, crypto it's rather better कि सेफ साइड पे पहले डिजिटल करेंसी की तरफ आप अडॉप्ट करना शुरू कर दें Um, या डू यू थिंक there's acha, probably a space to experiment in both in areas let's talk about Pakistan. लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि There आपके पास एक डिजिटल पीकेआर भी है एंड देन ऑन द अदर हैंड यू आल्सो कम अप विद समथिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो आल्सो Let's talk about this in Pakistani terms. In Pakistan, even a digital PKR at this point is not possible क्योंकि आपकी cash based economy है. आप digital currency के ऊपर तब जा सकते हो जब आप when you're a relatively cash free society. Like if a country from the Nordics or from Western Europe decides to do this, yes, they can go ahead with it.
Mhm. लेकिन आपका तो पूरी इकॉनमी क्रैश कर जाएगी इफ यू टेक आउट कैश फ्रॉम इट। तो you need to evolve, but you need to evolve relatively very quickly as a society and as a culture, क्योंकि ये चीज़ बाकी दुनिया में तो आ रही है। अगर कल को क्रिप्टो करेंसीज़ लॉन्च हो जाती हैं, डिजिटल यूरो भी आ जाता है, डॉलर भी आ जाता है, रूबल भी आ जाता है, युआन भी आ जाता है, तो आपको कौन पूछेगा? फिर हमारा यही रोना होगा जो हमारा अभी अपनी फिएट करेंसी के साथ है। या बट मेरे ख्याल से वो थोड़ी डिस्टिंक्शन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट डिजिटल डॉलर। तो क्या डिजिटल डॉलर मीन्स लाइक क्रिप्टो डॉलर या फिर द डिजिटल? Okay, I think you're confusing these two terms a little here. हम्म। There are cryptocurrencies which are pegged to the dollar. हम्म। Pegged का मतलब होता है उसका fixed exchange rate है. हम्म। Then there are crypto versions of that currency. ओके। Like for example, जो Europe है, it's releasing a crypto euro. राइट। The crypto euro is gonna be worth 1.5 fiat euros. तो ये जो एक आई थिंक इज़ जस्ट द कॉमन colloquial interchange of terms which is causing a little bit of confusion, but हाँ। हाँ, नहीं, क्योंकि द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग दिस बिकॉज़ द जब ये चाइना का जब इन्होंने लॉन्च की थी अपनी डिजिटल करेंसी व्हिच इज़ इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आई मीन इट्स द सेम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज़ देयर हार्ड कैश, राइट? सो उसमें फिर यही था कि मतलब पीपल हैड दिस क्यूरियोसिटी कि यार क्या इसकी वैल्यू would be completely different to say their already existing currency. तो उसमें दे सेड इट कि नहीं, वही होगी जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग करेंसी की है। It's just notes in digital form. एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही सारी चीज़ थी। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि भाई अगर कल को डिजिटल डॉलर आता है, इज इट द सेम थिंग एज व्हाट द चाइनीज डिड? वो अब उन पे डिपेंड करता है कि if हम्म। they're launching a digital currency or if they're launching a cryptocurrency. एग्जैक्टली, सो मैं चाह रहा था कि उस थोड़ा बाइनरी को ना थोड़ा डिफरेंशिएट हम कर लें ताकि एटलीस्ट people and for us also, अच्छा, like there's this जब आप एक distinction cryptocurrency in place already, बनाओगे हाँ। तो naturally no economy can entirely rely on crypto because crypto is very volatile. ओके। हैविंग अ डिजिटल करेंसी जस्ट मीन्स कि आपके जो नोट्स पेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन लाइक योर एग्जैक्टली फोन और समथिंग, एग्जैक्टली। विच आई थिंक इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ चेंज बिकॉज हम कार्ड्स भी तो हर जगह यूज़ करते हैं। जैसे आपका कार्ड स्वाइप होता है तो टेक्निकली स्पीकिंग दैट लो की इज़ डिजिटल एग्जैक्टली करेंसी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ मच ऑफ अ प्रॉब्लम। जो हमारा इशू ये है कि हमें डिजिटल करेंसी की तरफ भी जाते हुए मसला होगा क्योंकि लाइक जैसे आपके दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, वो इधर भी होते हैं, वो इंग्लैंड में भी होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में अगर मैंने आपके साथ काम किया, आपने मुझे दिहाड़ी देनी है, आप मेरे अकाउंट में भेजेंगे। लाइक आप मुझे कैश नहीं पकड़ाएँगे। बिल्कुल सही है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लाइक इफ यू वर टू गो डाउन एंड अडॉप्ट, से फॉर एग्जांपल डिजिटल क्रिप्टो भी कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी भी कर रहे हैं, सो आपने आपकी जिस भी हुकूमत ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की ना, सबसे पहले तो उसको फ़ारिग किया जाएगा क्योंकि हमारे लोगों का एक फ़ेवरेट साइड हॉबी टैक्स चोरी करना है। ठीक तो है। जब करेंसी डिजिटल हो जाएगी ऑब्वियसली वो ट्रेसेबल हो जाएगी। एग्जैक्टली। एंड ट्रेसेबल एंड होगी द तो आप वेरी टैक्स रीजन चोरी व्हाई नहीं दे कर एक्चुअली डिड सकेंगे। दिस इन चाइना, वो यही पर्पस है कि हाँ, वो बेसिकली तो ट्रांजैक्शंस को। डिजिटल हो गया सारा कुछ तो फिर आप टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। Hmm. Hmm, 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 hmm. But again, I think even Dr. Raza Bakir was also considering this idea of launching the digital currency, and मुझे लगता है CNN पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था। पर अगर डिजिटल क्रिप्टो की बात की जाए तो डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ government ever considering, or I the state bank don't ever know considering? if it's a possibility. Mm-hmm. But if I ever got a chance, I would definitely pitch them a few ideas because I think अगर हम एक crypto launch कर देते हैं Mm-hmm. and to counter the devaluation of the rupee, we peg it for like 100 rupees Mm-hmm. for one coin and हम अपनी local market में उसको incentivize करना शुरू कर दें तो I think we can do wonders. Right, 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 right. You often hear this thing कि भाई uh, Web 3.0 offers you a lot of these promises कि in comparison to Web 2.0, it's relatively far secure,
आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाइज़ भी काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी चीज़ों में भी मतलब उसको बड़ी एक हाइप मिली हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि इसी तरीके से है या ये बहुत ही मतलब एक इट्स अ वेरी फार फेच्ड नोशन कि अच्छा, बहुत ही लंबी सी छोड़ी हुई है इन्होंने कि बस आपने वेब आई 3.0 थिंक अडॉप्ट कर लंबी लिया। नहीं छोड़ी हुई, ओके। बट व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग बीइंग प्रॉमिसिंग, हुँ। it means the potential promises. It doesn't automatically translate to कि XYZ has to deliver this to सो you. व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि मतलब वेब 3.0 के अंदर भी मतलब साइबर सिक्योरिटी वाइज़ ब्रीचेस भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो Um, सकती हैं? cyber security breaches तो नहीं हो सकते, but yes, cyber crime may see an increase लाइक हाउ? because किस तरह से हो सकता है? okay, so let's say you have an NFT हुँ, collection which is going absolutely great. ठीक है। पूरी दुनिया में वो फैल गई है, वो ओपनसी के नंबर 1 ट्रेडेड पे आ गई है in terms of trade volume. Either people actually purchase a counterfeit or I just randomly send it to someone and somebody accidentally interacts with the counterfeit in their wallet. होगा क्या कि आपके वॉलेट के अंदर जो पैसे होंगे वो ड्रेन हो जाएँगे. वॉव! So basically, you can go bankrupt over one mistake. तो ये वाली विजिलेंस आपने मेंटेन तो करनी वो है. विजिलेंस फिर कैसे बंदा मेंटेन करे? मतलब मेरी जो ज़िंदगी की शायद जमा जमा पूँजी हो, मतलब अब तक की जो जमा पूँजी हो, वो तो मतलब एक ही लम्हे में मतलब सारी उड़ जाएगी। तो उससे हाउ डू यू लाइक मेक श्योर कि वो ना हो? As a like in this specific हुँ। example, um, I would say अकल का इस्तेमाल करें। बट मतलब हाउ? लाइक वो अकल का आपको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कुछ ये चीज़ें तो इन गलतफ़हमी प्लेस। क्यों है कि किसी को आप पे इतना प्यार है कि कोई आपको कोई टॉप क्लास एनएफटी मुफ्त में गिफ्ट कर देगा? इफ इट्स इन योर वॉलेट हुँ। डोंट टच इट। यू सेड यू कुड हैव 2 डिफरेंट वॉलेट्स या किस तरह की वो या चीज़ थी? um have one wallet which you've connected to like various websites, ओके, and use that wallet to enter giveaways and everything because obviously वो publicly post होगा जैसे email post होता है wallet address भी post कर दिया. Have another wallet you keep for cold storage. ओके। You can use any wallet for cold storage, just don't tell anybody that wallet exists. Or what you can do is there are specific wallets for cold storage जिनकी security is like amped up a level. Some of them are like offline wallets. हुँ, हुँ। तो जिस तरह how the same way you protect your computers from लाइक being hacked. आर देयर एनी नेम्स एनी रैंडम नेम्स दैट कम टू योर माइंड कि मतलब Trust is a very good wallet. ओके, Then Binance MetaMask wallet सबके पास हैं. राइट, You can have a Phantom wallet, you can have a Coinbase wallet. राइट। There, बट it's a अगेन very आई long आई आई list. डोंट थिंक मतलब वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ these नहीं, वॉलेट्स आउट not देयर। no paid sponsorships. राइट, 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 राइट। अच्छा, अब थोड़ा Not मैं like हमसे कोई पेड स्पॉन्सरशिप लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन चलें खैर। अच्छा, मुझे ये बताओ हाउ डू यू एक्चुअली हेल्प बिल्ड ट्रस्ट इन एन ऑलरेडी ग्रोइंग वोलेटाइल मार्केट? मतलब अब लाइक नॉट सो लॉन्ग अगो वी सॉ अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं वोलेटाइल पीरियड आया था इवन व्हेन इट केम टू क्रिप्टो। अभी सो आजकल भी हाँ, इट्स कॉल्ड द क्रिप्टो विंटर। हाँ, इंटरेस्टिंग। अ, सो इट्स नॉट जस्ट क्या कहते हैं द स्टार्टअप सेक्टर, इट्स ऑल्सो इट्स ऑल्सो द क्या कहते हैं क्रिप्टो भी जो है I think it's gonna be the whole world by वर्ल्ड। next year हुँ, हुँ, because जो आपका एक बेसिक रिसेशन का हुँ, साइकिल होता है, हुँ। वो पूरा हो गया तो सो वो यू तो सी वी कैन लाइक अ सी इट नॉक कमिंग। ऑफ एक नॉक ऑफ इफेक्ट है और मतलब वो हर जगह हर चीज में दिखने में आएगा। I think crypto winter क्योंकि पहले आ गया है, there is a chance we might be out of the crypto winter, हम्म। and there is also a chance कि जब बाकी सारी दुनिया में recession आएगा, तो people increasingly turn to crypto, and that sort of gives this market a boost. एंड I'm not the expert on the financial वो, so I can't really comment on it, but बट दैट्स योर हंच। it's just a possibility कि ये हो सकता है. राइट, राइट, राइट। सो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल पार्किंग देयर एसेट या Either increased और people will कन्वर्टिंग turn देयर to एसेट crypto, इनटू yeah, क्रिप्टो। either हाँ, that will happen and crypto की मार्केट को बूस्ट मिल जाएगा, वरना crypto winter and your other economic recession will just go on side by side. I know we're like in middle of a difficult patch, if I may say, which can last say until the next year. But तुम्हें कोई लग रहा है कि कोई इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज भी हैं ऑफ वेब 3.0 और अगर हैं तो वो क्या हो सकती हैं?
And then the problem is this, I see a lot of realization in Pakistan ke yaar ye bhi ho sakta hai, ye bhi kar sakte hain. But then I never see that realization converting into something tangible, या we don't tend to have that kind of an attitude कि अच्छा यार अब इसको एक अच्छी promising चीज़ में convert करना भी है. अच्छा आई थिंक माशाल्लाह हम काफ़ी ज़हीन कौम है, हमारा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन मसला ये है कि वो चलता सिर्फ़ जुगाड़ लगाने के ऊपर है। हुँ. अ, और अगर गलती से कोई बंदा ज़्यादा अच्छी बात कर दे, तो पहले तो घर वाले उसको यूँ करके देखते हैं कि तुम्हारे मुँह से कोई पढ़ी-लिखी बात कैसे निकल आई? उसके बाद बाकी सारे लोग कहते हैं मतलब ठीक हो, मतलब चले हो गए हो। तो ये सारा कुछ चलता रहता है, देयर हुँ. इज़ ऑल ऑफ दैट। आई थिंक कि इन पाकिस्तान देयर आर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़। You can revolutionize your whole cottage industry if you sort of incorporate Web3 into your mainstream. हुँ. You can do that, but कौन करेगा? Right. Uh, there are private investors, but private investors are not gonna invest in a country जिसकी zero economic policy है. Right. Your economic policy literally changes anytime, any day. So like if people want to sort of like अपनी थोड़ी समझ-बूझ वेब 3.0 के बारे में अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो वो हाउ कुड यू बी लाइक अ सोर्स ऑफ लर्निंग टू देम? किस तरह से उसको थोड़ा हेल्प आउट अच्छा, कर so सकते हो? I'm working with Manifest Studios. हुँ, हुँ. मैं उनकी community manager हूँ. We're also going to be coming out with a very amazing NFT collection later. But for now, we've started this awareness portal हुँ, हुँ. and we're all about accessibility, making Web3 accessible to everyone. So you can, go visit their website, visit the portal, learn more about it. And also NFT community, when you enter and when you start हुँ, talking हुँ. to people, लोग बहुत helpful हैं. ओके. They're very open, they're very welcoming. उस तरह barrier to entry नहीं है कि you feel out of place or you feel alone. नहीं, बट मैं वापस थोड़ा क्वेश्चन पे आऊँगा। मैंने कहा कि अगर लोग वेब 3.0 के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी बेहतर बनाना चाहते हैं, आर यू कमिंग अप विद समथिंग दैट We've already launched a website. ओके. Manifest Studios ने already launch कर दी है. It's basically an awareness portal जिस पे how to guides हैं, basic explainers ओह हैं, वंडरफुल! there are articles explaining different buzzwords and all of that. सही। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये बता दो कि यार हमने तो सारी पॉसिबिलिटीज़ की भी बात की है, सब चीज़ों की बात की है। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। तुम्हें लगता है कि कोई इसमें कॉन्स भी हैं वेब 3.0 के? I think the first con is कि Web3 is a little technical. ओके. Even जब मैंने Web3 में जाना था, I had to research it a little bit. And राइट. you sort of have to find your footing slowly. हुँ, हुँ। दूसरी बात ये कि आई थिंक Web3 जब अगर मेन स्ट्रीम में आ जाता है, तो जो आपकी रीड ओनली वेबसाइट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाएँगी। ओके. एंड इवन Web2 वेबसाइट्स आर गोना नीड टू लाइक सॉर्ट ऑफ अपग्रेड देमसेल्व्स जैसे okay, software update just makes me laugh at this point because it's become a meme. ओह But बॉय! referring to software update in आपको ज very आपको आपको technical ज़रूरत तो नहीं है ना? terms, मुझे तो नहीं है ज़रूरत मतलब। uh, ये तो ये तो मतलब मुझे मेरा नहीं सिस्टम नया है। we don't get to decide that अच्छा, कि ठीक है। ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, लेकिन क्या पता किसी के ख़्याल में हो, बस आगे अल्लाह खुदा बचाए। ना करे। अच्छा, आप वापस आ जाएँ अपने जवाब अच्छा पे। चलिए ख़ैर। Speaking of a software update in हाँ। very technical terms, हुँ, हुँ। अम, जैसे आपने अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट करना होता है हुँ, या हुँ। आपने अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस अपडेट करना होता है रेगुलरली, तो existing websites will need an upgrade to sort of come to terms with Web3. And because it uses sort of a very not a very but it uses a heavier technology, तो जो आपके it's not going to be accessible on all the gadgets. Digital divide की term है, we've started throwing it around a little more casually, हुँ, and I've हुँ। also noticed it's not just Pakistan, it's a general gap between the global north and the global नहीं, ये south. पूरी दुनिया में है, आई कंप्लीटली एग्री Like विद यू, बट लेट मी जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक ऐड क्लैरिटी टू yeah, इट। लाइक there's one person who could say perhaps, you know, afford a very expensive gadget. And on the other hand, you have another person who perhaps cannot, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसके पास शायद 20,000 की याद।
30,000 की एक चीज़ होगी। उस बंदे के पास एक आर्टिस्टिक स्किल भी अच्छा है, बट अगेन इन ऑर्डर टू बिल्ड अपॉन हिज और हर स्किल्स, या उसने अगर अपना आर्ट प्रोडक्ट रिफाइन भी करना है, तो ज़ाहिर है ही और शी एक्चुअली नीड्स दैट प्लेटफॉर्म, राइट? सो जब उसके पास पैसे ही नहीं है ना, बैंक से वो जाके लोन ले सकता है, तो फिर वो इन अ वे एक डिवाइड तो कंपाउंड होती जाएगी ना। अच्छा हालांकि आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट कि ग्लोबल फिनोमेना नहीं है, मतलब अच्छा डेफिनेटली। अच्छा, एक तो इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे यू सी पाकिस्तान हम्म। एंड देन यूट्यूब फिल्म्स विज़न 2030। हम्म। तो आपको ना दिन में तारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, राइट। 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि राइट। हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? हम क्यों हैं? तो और यहाँ इतना कोई और यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना चाहता, मतलब बस कहते हैं या लेट दैट के टू। सारा काम हो जाए We want बस। to be like transported to या that world, we don't want to work या towards it. या वेब 2 के टर्म्स में अगर देखें तो आई थिंक इट वुड बॉयल डाउन टू आपके कितने मेगापिक्सल कैमरा से इंस्टाग्राम पे तस्वीर डली हुई है और मेरे की कितने डली हुई है। आपने सैमसंग रखा हुआ है, मैंने आईफ़ोन रखा हुआ है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर मैंने या किसी और ने आईफ़ोन रखा हुआ है तो वी आर पेइंग फॉर द ब्रांड नेम। वी आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोसेसर बिकॉज़ द प्रोसेसर इज़ लाइक ऑलमोस्ट नियरली द सेम एंड इट कैन सस्टेन द सेम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। If you come to computers, ek to there's a lot of ingenious ways we have come up with because we're a relatively poor country who cannot always afford new tech. We can't afford an entire new device, तो हम उसके bits and pieces upgrade कर देते हैं. We make computers ourselves. एक तो there's that option जो लोग खुद से करना शुरू हो जाएंगे, and then there's also the fact कि a model like a business model, but in a sort of a public-private partnership. Because if it's entirely public, it's not going to work. If it's entirely private, it might get a little too expensive and it might exploit people, सो which we यू don't want. सो यू सर्टेनली डू नॉट वांट देम टू बी एक्सक्लूसिव, कि यार सिर्फ सोसाइटी का एक सर्टेन सेगमेंट ही Yeah. यूज करे उन्हें। So, ठीक है। जैसे internet cafes हुआ करते थे. हम्म। So we sort of have those, you know, places where people लाइक यू who कैन are हैव दोस interested स्पेसेस, लाइक in, जैसे कोवर्किंग yeah, like स्पेसेस टाइप एक की जगहें होती हैं, exactly. या So like there's an office, let's say, or there's this net of computers हम्म। which is placed somewhere, and if there are NFT artists जिनकी अपनी devices इतनी high quality की नहीं है, राइट। yeah, they don't have access to a scanner at home or anything, so they can just go and pay a very nominal fee and get things done. Right, right. And you think that's one way of making sure that there's also accessibility, Yeah. but then then you're also, uh, helping drive productivity, and then at the same time making sure that your products are also globally competitive. Yeah, and you're also creating more jobs, Interesting. and you're also, sort of incentivizing coming But in. would it require a lot of investment before we wrap this up? मतलब तुम्हें लगता है कि क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? यार आई थिंक अगर किसी ने एक दुकान किराए पे लेके उसके अंदर 6 कंप्यूटर और 4 स्कैनर हम्म। रखने हैं तो ये इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं। राइट। और वो राइट। भी जब उसके ऊपर उन्हें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल जाए क्योंकि पार्टनरशिप है तो नथिंग लाइक। क्या पैगाम देना चाहोगी? अच्छा, सो ऑल इन ऑल मतलब बड़ा टिपिकल सेंस में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कौम के नाम मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कौम को कि अ, जब भी कोई नई चीज़ आती है, तो उसके साथ मसले हमेशा होते हैं। पे? ठीक है। अ, इंस्टेड ऑफ जो हमारी आदत है कि हमने पहले लाउंज में बैठ के खाला के पास रोना होता है, फिर फूफू के कमरे में जाके रोना डालना होता है उसी डोंट बात पे। डोंट साउंड लाइक अ बट पर्सन हु माइट एंड अप सेइंग कि यार ये तो मिसोजिनिस्ट किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, आई नहीं, एम नॉट। नहीं, वी उसके वर बाद नॉट आपने जाके मिसोजिनिस्ट, वी आर नॉट बीइंग सेक्सिस्ट ईदर। हाँ। वालिद साहब के हाँ। मिन्नत-तरले करने होते हैं कि राइट। ये हो गया है, वो हो गया है, तो प्लीज़ ऐसे कर दें, वैसे नहीं हो रहा। ठीक। तो इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग दैट अप्रोच, वी नीड टू लुक फॉर वी नीड टू लुक इनसाइड आवरसेल्व्स फॉर अ वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कि ये चीज़ है, ये इसका मसला है, अब मसले का हल निकालना है। जब हम ठीक है। मसले का हल जुगाड़ से निकाल सकते हैं, तो हम उसको कोई प्रोडक्टिव हल भी तो निकल सकता है चीज़ों का। ठीक हो गया। तो आई थिंक दैट्स ऑल। Thank you so much, Komal, for being part of today's discussion. थैंक यू फॉर हैविंग It मी। was
Excellent. I thoroughly enjoyed it. I really learned a lot from this conversation today, I'm glad to and I hear really that. hope our viewers have also benefited from this conversation. So I thank you hope the so same. much. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Pleasure is all ours. Thank you.